आज हम आपको फिफ्थ पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन का बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लास्ट वीडियो में जैसे अपन ने इलिप्स पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा और सर्किल, ये जो कोनिक सेक्शन के पार्ट्स थे। अभी आपका लास्ट पार्ट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जब x एक्सिस पर आपके फोकी होते हैं उस केस में आपका x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, and if the foci on the y axis, then the standard equation will be of the hyperbola y square divided by a square minus x square divided by b square is equal to 1. y square divided by a square minus x square divided by b square is equal to 1. जब आपका फोकी जो है y एक्सिस में हो और जब आपका फोकी x एक्सिस में हो, ऐसे केस में आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पांचवा पार्ट है। स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपन डिराइव कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट जो पार्ट आपका है उस इक्वेशन को अपन डिराइव करने जा रहे हैं जब आपका फोकी जो है x एक्सिस पर हो, और इस केस में यहाँ पर एक कोई पॉइंट अपन p ले लेते हैं, किस पर, हाइपरबोला पर। ऑन दिस केस लेट pxy be any point on the hyperbola f1 and f2 are the foci here O is the midpoint। O ये ओरिजिन जो है ये f1 और f2 का आपका मिड पॉइंट है, एंड सेंटर जो हाइपरबोला का है ये आपका x एक्सिस में है। ऑन दिस केस as we know that pf1 minus pf2 is equal to 2a. Here a0 versus of first case minus a0 and a0 is versus of their two cuts of the parabola. So by distance formula we apply here x plus c whole square plus y minus 0 whole square, it means y square minus pf2 का वैल्यू जो आपका है x minus c whole square plus y square is equal to 2a। अब इसको हमने ट्रांसफर किया, and after this squaring both sides we get here x plus c whole square plus y square and apply here a plus b whole square, it means a square plus 2ab, this term is 2ab and a final b square। y square will be cancelled to each other and taking another term as LHS। After this we have x plus c whole square minus x minus c whole square minus 4a square। जितने भी रूट ओवर के अलावा टर्म्स हैं उनको हमने लेफ्ट साइड में ले आए और राइट साइड में आपका रूट ओवर का टर्म हमने केवल रखा। आफ्टर दिस बाय सॉल्विंग टू नेक्स्ट स्टेप वी हैव 4cx, ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, c स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a रूट ओवर x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड आफ्टर डिवाइडिंग both sides by 4a we have xc divided by a minus a equal to x minus c whole square plus y square root over। Now on squaring again we get a square plus b square minus 2ab, and here remove root over we have x minus c whole square plus y square। After solving to next step and taking x square in one bracket, all the terms of x square in one bracket, minus y square equal to c square minus a square, they are all constant term, and in next step dividing both sides by c square minus a square we get x square divided by a square minus y square divided by c square minus a square equal to 1। And we know that the relation between semi major axis, it means transverse and convex, here we know that c square minus a square is equal to b square। So on this place we put b square and get the standard equation of hyperbola x square by a square minus y
1। अब आपको ये ध्यान रखना है, यदि हाइपरबोला में ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो इस केस में इक्विलैटरल हाइपरबोला हो जाएगा, और लेंथ ऑफ हाइपरबोला की जो आपकी है, लेटस वेक्टर की जो लेंथ है आपकी 2b² डिवाइडेड बाय a। हियर द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाय a²। अब आप एक्सरसाइज में चलिए, एक्सरसाइज 11.4 का जैसे यहाँ पर हमने जो है फिफ्थ क्वेश्चन को लिया, इन सभी क्वेश्चन में 1 up to 6 क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी एंड द वर्सेस ऑफ द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। द गिवन इक्वेशन 5y² - 9x² इज इक्वल टू 36। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए बोथ साइड हमने 36 से डिवाइड किया, एंड इट आल्सो बी written in another way as y² divided by 36 by 5 minus x² divided by 4 is equal to 1. Now by comparing the given equation from standard equation, y² divided by a² minus x² divided by b² is equal to 1. a² की वैल्यू आपकी 36 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 36 by 5 है, एंड b² की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 है। As we know that on this case x axis of hyperbola is y axis here, and next coordinate of the foci 0 plus minus c, relation between c and b and c² equal to a² plus b², and coordinate of versus 0 plus minus a, eccentricity is equal to c by a, and the length of the lattice rectum is equal to 2b² divided by a. Please correct है, axis of hyperbola. Axis of hyperbola is here y-axis. Coordinate of foci 0 plus minus c. Relation between c and b, as we know that c² is equal to a² plus b². Coordinate of versus 0 plus minus a. Eccentricity is equal to c by a. एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाय a। ये आपके फार्मूले हैं। अब आपको जैसे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी एंड वी नो दैट 0 plus minus c, thus the value of c equal to a² plus b²। a² means 36 divided by 5 plus b² means 4, 5 4 are 20, 56 divided by 5. So the value of c equal to root over 56 divided by root over 5. It means 2 root over 14 divided by root over 5. After putting the value, we have coordinate of foci 0 plus minus 2 root over 14 divided by 5 on this way. It is formula. And second, coordinate of versus 0 plus minus a. So the value of a is here 6 divided by root over 5. So 0 plus minus 6 divided by root over 5 is the versus of the hyperbola, and eccentricity e is equal to c divided by a. The value of c equal to 2 root over 14 divided by root over 5 whole divided by a. It means the value of a 6 by root over 5. Root over 5 will cancel and 2 3 are. So root over 14 divided by 3 is eccentricity of the hyperbola, and length of lattice rectum is equal to 2b² divided by a. The value of b² is here 4, so 2 into 2 square divided by 6 divided by root over 5. ये आपका जो है root over 5 ऊपर गया, and 2 3 जा, so 4 divided by 3 root over 5. And this way these are answer of this question. Now see your next question. Now see your next question, question number 11. Here given foci 0 plus minus 13, the convex axis of the length, convex axis of length 24. We need to find equation of hyperbola. As given foci 0 plus minus 13, so we know that the coordinate of foci 0 plus minus c
on this way the conjugate axis, on this way focus on the y axis, and second is given conjugate axis is of length 24, that is 2b, so that 2b is equal to 24, and this way the value of b is equal to 12, and we know that c square is equal to a square plus b square. Here the value of c is equal to 13 and value of b is equal to 12. So putting the value in the relation c square equal to a square plus b square, we have a square equal to 169 minus 144, it is equal to 25, that is 5 square. And putting the value of a and b in standard equation, we get the required equation of hyperbola is here. Y square divided by 25 minus x square divided by 144 is equal to 1. Now see your last question here of this exercise. Here given key 0 plus minus c, it means 0 plus minus root over 10. ये आपका given है. So the value of c by comparing we have root over 10, and according to given condition axis is on the y axis of the given hyperbola. So required equation of hyperbola is y square divided by a square minus x square divided by b square is equal to 1. And as we know that according to this condition the value of c is equal to root over 10, and the relation between c and b, c square equal to a square plus b square, so b square equal to c square minus a square. Putting the value of b square here, we get 10 minus a square, x square divided by it is equal to 1, and y square divided by a square. It is also given the hyperbola is passing to the point 2, 3. So putting the value of y and x respectively, we have here 3 3 are 9 minus 4, here a square minus 10 minus a square is equal to 1. Now it is passing square 2 3, so putting the value of on the places of y 3 and on the places of x 2, we get after solving next step 9 into 10 minus a square minus 4a square equal to a square 10 minus a square. हमने ऐसे लिया और a square 10 minus a square का दूसरे शब्द में कह सकते हैं, या तो क्लास मल्टीप्लाई किया है वो साइड में हमने मल्टीप्लाई किया. Solving the next step, we have a to the power 4 minus 20a square plus 90 is equal to 0. After solving the middle terms, we get minus 18a square minus 5b square plus 90 is equal to 0. So taking common as a square, in bracket a square minus 18 minus 5a square minus 18 is equal to 0. On this case, the value of a square is equal to 5 and the value of b square is equal to 18. So we know that b square is equal to 10 minus a square. On this case, here we have the value of b square after putting the value of a square is equal to 5, and b square is equal to 10 minus 18 is minus 8. Negative for the conjugate axis is not possible here. So b square is equal to minus 8. It means a square is equal to 18. Neglected. And hence the value of a square is equal to 5 and value of b square is equal to 5. Putting in standard form, we get the required equation of hyperbola is here y square divided by 5 minus x square divided by 5 is equal to 1, or y square minus x square is equal to 5 is answer of this question. Hence your conic section part is over. Thanks.